नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट दृश पर एक और नए वीडियो में, जहां पर आपको मिलते हैं एग्जाम रिलेटेड कंटेंट्स एक कंप्लीट क्रिस्प और कंप्लीट कंटेंट के साथ। तो आज है हम लोगों का पॉलिटी सीरीज का पार्ट 2, जहां हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट और सोल कहलाता है। तो अगर आप यूपीएससी, नेट, बीपीएससी जैसे कोई भी इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये टॉपिक आपके लिए 100% इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक से बहुत ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, एज वी हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड एग्जाम टिप्स एज वेल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल to get your daily dose of general studies information. Section 1 will include basic introduction, that is, the fundamental rights has been included in the part 3 of our Indian Constitution. This is also called Magna Carta of India, क्योंकि fundamental rights एक citizen को freedom as well as equality के protection में भी help करता है. Usually there were 7 fundamental rights, but 44th amendment के बाद से 6 fundamental rights have, जो कि है right to equality, Article 14 to Article 18. Then comes the right to freedom of, which is the Article 19 to 22. Then right against exploitation, 23, 24. Right to freedom of religion, 25 to 28. Cultural and education rights, 29 and 30. And then comes to right to constitutional remedies, that is Article 32. Section से एक एग्जाम हो सकता है कि what is the other name of fundamental rights in India, that is the Magna Carta of India. तो चलिए सेक्शन 2 में हम आर्टिकल को ब्रेक डाउन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप विल गो फर्दर। तो आर्टिकल 14 जो है वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड आर्टिकल 15 इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन और other such grounds. Article 16 is equality in the opportunities in public employment, and then comes the Article 17, that is abolition of untouchability, and Article 18 talks about abolition of titles. Article 19, that is right to freedom, which will be including this freedom on such basis such as the assembly, then freedom of speech, expression and gathering, and many more. Article 20 speaks about protection in criminal offences. Article 21 is the right to life and personal liberty. Article 21A, that is right to education, which has been amended by the 86th Amendment Act. And then comes Article 22, that is protection from arbitrary arrest. Right against exploitation, that is 23 and 24. So Article 23 talks about the prohibition of human trafficking. Article 24 is no child labor under the age 14 in hazardous jobs. तो इस सेक्शन से जो एग्जाम टिप हो सकता है वो है which article abolishes untouchability and which article abolishes the use of titles. जिसके आंसर्स होंगे आर्टिकल 17 फॉर अनटचेबिलिटी एंड आर्टिकल 18 फॉर द abolition of titles. तो अब सेक्शन 3 में जानेंगे राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ. आर्टिकल 25 टॉक्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड रिलीजन. आर्टिकल 26 में है जो manage religious affairs. Then comes Article 27, that is no tax for religious promotion. Then comes Article 28, that is no religious instruction in government schools. Then comes the cultural and educational rights, that is 29 and 30. Article 29 talks about the protection of the cultural identity, and Article 30 is the minority institution right. तो इस एग्जाम टिप जो मैं दे सकती हूँ वो है कि आर्टिकल 30 कौन से कम्युनिटी के rights protect करता है, that will be minorities, and you can include more such that what Article 29 deals with or what Article 25 deals with, and many more questions can come from this section. Then comes the 6th right, that is right to constitutional remedies in the section 4, which is the Article 32. ये right citizens को एक पावर देता है to approach the Supreme Court directly अगर उसके कोई भी fundamental right violate होते हैं तो. This right has been said as the heart and soul of the Constitution by none other than Dr. B.R. Ambedkar. इस राइट में जो रिट्स मेंशन किए गए हैं वो है habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and the quo warranto. इस सेक्शन से जो एग्जाम टिप मैं आपको दे सकती हूँ वो होगा कि in which article the Supreme Court can issue writs, it will be Article 32. दोस्तों ये था फंडामेंटल राइट्स का क्लियर और एग्जाम ओरिएंटेड ब्रेकडाउन. इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्स में MCQs, मैच द कॉलम्स एज वेल एज assertions and reasons टाइप क्वेश्चंस आएंगे. तो नेक्स्ट सीरीज दैट इज पार्ट 3 में हम लोग कवर करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो पार्ट 4 में आता है. तो तब तक हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो, ताकि हम आ सके
और सारे मटेरियल्स के साथ टू मेक यू एग्जाम रेडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फोकस रहो और गवर्नमेंट प्रदेश के साथ ग्रो करो।